It was a moment of legitimacy when we saw you receive that Padma Shri. चिट्ठी आती है तो उसमें कि आप ये कपड़े पहनेंगे, ये ऐसे करेंगे. So I called them. I said कि I want to receive this in a chef's jacket. नहीं माने. अच्छा नहीं माने. नहीं माने. मैंने तो डिसाइड कर लिया था. मैंने कहा कि मैं तो आऊँगा शेफ कोर्ट में. और अगर नहीं मुझे देना है तो देखेंगे. You take food out of me, my life is gone. So it's that important. Because there are so many chefs today. There are hundreds and hundreds and hundreds of chefs who are now influencers. They are home cooks. How do they think about food as also a business? At some point, I don't know if that happened, but I want to know, was there any time when you said, nahi hoga ye mere se? So if I did not succeed with it, तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा. आपके लाइफ में कभी वो पॉइंट आया था? बहुत बारी होता है. हाँ? AI आज जो बात कर रहे हैं, I started with this maybe 10 years ago. I deep dive at that time. दुनिया में कोई नहीं कर रहा था उस समय. Is she the person you turn to for honest feedback? I think family is somebody who always tells you what's right, what's wrong. बाकी लोग तो आपको खुश कर रहे होते हैं. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. मुझसे वो नहीं होता. मेरे से I can't do it. I can't do it. What people look at is, मैं जब मुंबई आया मैं प्लेटफॉर्म पे सोया. अरे तो क्या हो गया, सोए ना. He walked into India's living rooms with a ladle and a smile and never left. Through Khana Khazana, Asia's longest running cookery show, broadcast across 120 countries, Sanjeev Kapoor is the chef who taught an entire generation how to cook. A Padma Shri awardee, author of more than 200 cookbooks, and founder of India's first food-dedicated channel, Food Food, he didn't just change what we eat, he changed how we see ourselves in the kitchen. All right. First of all, let me ask you if I can address you as SK, like most of us in the industry lovingly call you. Absolutely. So some people call me chef, some people call me SK, some people just look at me and smile. So whatever works. And the smile, I think, always works with you. Yeah. And look at where we are, SK, today. I mean, just the most surreal setting. Who knew that after sharing so many meals together and cooking a few together, we'll actually share a table here by the banks of Ma Gange. Amazing setting. Truly amazing setting, the Taj Ganga Kutir. I mean, it's a perfect setting for the moment that I am having. For me, this is a moment of truth because you are somebody I have always looked up to and admired. You're a pioneer of Indian cooking. You've taken Indian food across the globe. You are one of the only few chefs to have got the Padma Shri. And it's such an honor. Chef Thank you. Sanjeev Kapoor, a big welcome. Thank you, Amrita. It is such a pleasure. It feels as if I am having one of those conversations when I was trying to push you into this world of food and cooking, and I exactly knew what I had in my mind. You had your doubts. I had my doubts. So let's start with this. You are somebody who somehow always knows what's going to happen, what's the right thing to do. I had been in the advertising industry for so many years. I think मैंने सारे दुनिया के सारे ads, products endorse कर लिए थे. I was so comfortable in front of the screen, but yet when you offered me Mummy Ka Magic, पहले तो हमारी ये discussion हुई कि as Punjabi girl, the first thing she learns from her mother is cooking. You told me, be the mum that you are, the cook that you are, जो तुम घर में करती हो, be Amrita Raichandani, who's mother of Agastya Raichandani, and that's going to work. The answer is for all of us to see that formula clearly worked. Mummy Ka Magic went on to become one of the longest running cooking shows after yours, of course. How did you know at that point that this formula will work and it will actually be life-changing for most chefs and most home cooks across the country? So actually, normally nobody knows what will work, what will not work. So when we were launching Food, so everyone doubted that 24-hour channel on food. Why would you do it? One. Two, second thing people will say, oh, you will create your own competition, you will create more people in world of food. That I was very clear about, that the only way to make this whole business of food big is to have many ambassadors, not just me. I can't change that. It's not possible. So when we decided to do food,
naturally we were looking at different day parts, we were looking at different concepts, we were looking at different age profiles. And one of the things that internationally that was working was that somebody in TV, I think somebody who has great screen presence, somebody who's very good looking, and if that person, at that time Nigella Lawson was big, Yeah. but her positioning was very different. That was seduction in kitchen, that was very different. And we were looking at India in a different way. I was clear that we need to reach homes through moms because that's something, that bond is the best bond, that's eternal bond, that's if you get that connection right, it's game over. It was that simple. Who do we get? You were already doing a commercial where the tagline was Yes. मम्मी का मैजिक चलेगा क्या? And आपको वो याद है वो कॉन्वर्सेशन में ऐसे सू कर देगा वर्लपूल हमको एंड आई रिमेम्बर यू सेइंग जब सू करेगा तो देखेंगे तब तक ट्राई करते हैं बिकॉज दिस इज अ टैगलाइन दैट विल वर्क So I was very clear. So, and I thought that I'll talk to you and it'll be done. It'll be like this. I admire you for that conviction that you have. Not only me, there are so many people after me who have taken that path. And Correct. today, you know, our country is full of celebrity chefs, and it all started thanks to your conviction. But I now want to move to a thing that I wanted to discuss with you. You know, for us, as a part of the culinary ecosystem, it was a moment of legitimacy when we saw you receive that Padma Shri by our president. I want to live that moment vicariously through you. Could you tell us what was that feeling? What was going through? What happened? Actually, before that moment, for years, not just months, for years, every time, every year on 25th of January, when in the evening when it is announced, they would be calls, अरे आपका नाम नहीं आया. In forums, at social events, कभी कुछ ऐसे पद्मश्री वगैरह कुछ अवार्ड की बात हो, so basically, अच्छा आपको तो मिल गया होगा ना, आपको तो मिल गया होगा. And I would say I had never even thought about it कि कैसे क्या क्या होता है. तो it was in my industry I had got awards. I was used to that, but this happened for many years. तो मुझे लगा कि नहीं, I think इस इंडस्ट्री में chefs should be recognized. So then I met few people and I said that I think this trade needs to be recognized, and I am not saying that it should be given to me. I want chefs to be recognized. So actually I started this work much before I got it, and I was very clear that there are chefs, there are master craftsmen in kitchen who need to be recognized. And every time they say, "Nahi, but I said no, that will be wrong. That if I'm trying for some recognition for this field and I am given, that's not what I'm looking at." In 2017, when I was early in the morning, at around 6:37. My phone rings and दूसरी तरफ से मैं ये सेक्रेटरी ऐसे कुछ ऐसे ये बोल रहा हूँ, आपका नाम जो है पद्मश्री अवार्ड के लिए है वो आपको दिया जा रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. तो अच्छा आपसे सवाल पूछा है, क्यों कोई मना भी कर सकता है क्या? No, so actually I think that's a process. That's a process कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे. तो मुझे ऐसे लग रहा है कोई बेवकूफ़ बना रहा है, राइट. 25 तारीख जनवरी की सुबह 2017. एंड मैंने कहा अच्छा मैं वापस फ़ोन करता हूँ. ऐसे मैं नींद में तो आधा था. फिर जब फ़ोन नंबर देखा, फिर किया, then I realized कि this is real. फिर उसके बाद में ये तो अनाउंस तो हो गया, तो फिर ये हो गया कि अब 2 दिन डिसाइड हुए कि एक आई थिंक इट वाज 30th March एंड वन वाज 13th April. ये दोनों दिन में से कौन से दिन वुड बी कन्वीनियंट. So 30th March, I was somewhere busy or whatever, so I chose because there were एक ये या ये दोनों डेट में से चूज़ कर सकते थे. आधे लोग इसमें लेंगे, आधे ऐसे कुछ. So I chose 13th of April. 12th April को हमारी फूड की पार्टी थी. ओह. तो फर्स्ट हमने पार्टी मतलब जो हमने अवार्ड किए थे सबसे पहले वाले, राइट. तो हमने वो फूड के अवार्ड से सेंट रिजेस में हम कर रहे थे. एंड
तो 13th तो ये सुबह होता है और 12th को वो भी मैं नहीं कैंसिल कर सकता, वो तो अब अनाउंस हो गया, सबको बता दिया, सब कुछ है। ऐसे ठीक है देखेंगे, पहुंच जाएंगे। फिर ये आ गया कि अरे ये जो है 12 तारीख को रिहर्सल है, आपको पूरा रिहर्सल। मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकता। ऐसे कैसे कह सकते हैं? यू कांट। आई सेड नहीं हम ये अवार्ड है। नहीं हमारे भी हमारे लिए वो अवार्ड है। दैट्स हाउ। सो एनीवे I did not go for the rehearsal. No, I did not go. And ऐसे देखेंगे क्या होता है अब because ये मैं कॉन्वर्सेशन में था कि मैं आऊँगा नहीं, उसके लिए नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो they were already I wouldn't say upset but they were like कि क्या है how could you do that? But anyway तो फिर मुझे लगा कि अच्छा अब जाना तो है ही, तो चिट्ठी आती है तो उसमें कि आप ये कपड़े पहनेंगे, ऐसे करेंगे। सो national dress. So I called them. I said कि I want to receive this in a chef's jacket. Because I knew कि background क्या है कि this is not for me. मैंने जो मेरी पहली बुक जब लॉन्च की थी तो it was launched actually at President House, राष्ट्रपति भवन। तो उस समय करीब 25 शेफ्स ऑफ इंडिया को अपने साथ लेके गया था। My first book. What was it called? Khazana of Indian Recipes. Oh wow. And I said that this is not my book, this is book from chefs of India. तो मेरे दिमाग में तो वैसे पहले से ही चल रहा था। तो मुझे कहा कि नहीं शेफ कोर्ट में नहीं आप आ सकते, आपको। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं वो प्रेसिडेंस नहीं है। मैंने कहा प्रेसिडेंस कौन सी प्रेसिडेंस में आपने कितने शेफ्स को दे दिया है, कौन सा मतलब नया तो ये मिल रहा है। तो एनीवे दे सेड नो। आई सेड नहीं बट क्यों आप ना करें? कहते नहीं हमारे पास पहले भी रिक्वेस्ट है। मैंने कहा पहले रिक्वेस्ट कैसे आएंगी? कहते नहीं पहले मतलब जैसे डॉक्टर्स कहते हैं और डॉक्टर्स को मिलता है तो वो डॉक्टर्स दे ऑल्सो वांट टू कम इन डॉक्टर्स। आई सेड नहीं वो बात नहीं है। मैंने कहा ये शेफ्स वाले जो है ना, इट्स लाइक यूनिफॉर्म सर्विसेज होती है जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनको सारे वैसे मिलते हैं ना, तो हमारा भी उसी तरह से है। नहीं माने। अच्छा नहीं माने। मैंने तो डिसाइड कर लिया था। मैंने कहा कि मैं तो आऊँगा शेफ कोर्ट में, और अगर नहीं मुझे देना है तो देखेंगे। अच्छा। हाँ। माय गॉड। तो मैं शेफ यूनिफॉर्म में पहुंचा। एक्चुअली एंटी क्लाइमैक्स हो गया। एंटी क्लाइमैक्स कैसे? मैं तो पहुंचा, वो सारी टीम राष्ट्रपति भवन, वहाँ पे शेफ जो है वो मुझे रिसीव करने के लिए आए हुए थे। I don't think they said नहीं ये कपड़े चेंज करके आओ। कुछ नहीं था। एंड सो द photograph that I have is in that. But actually जब वो last जब नाम हुआ तो ये जो नाम बोला संजीव सुरेंद्र कपूर पाक कला, and those steps, 20 steps that I walked, that moment I realized how big it is and how fulfilling for me. Right from जो मैंने टाइम देखा है where when I was actually told by general manager of a hotel कि आप लॉबी में क्या कर रहे हैं? What are you doing in the lobby? You should be in the kitchen. Chefs are not allowed to be in the kitchen. Is that right? Yes. So from there to receiving the Padma Shri award, that was something which I think it was a journey of a lifetime, but very fulfilling. I have to clap. I wasn't there personally, and I wanted to live this moment, and I was literally getting goose flesh. I could see the wonderful waiters standing with the Bengali tray, which was going to be our breakfast, but I couldn't allow them and spoil this moment because I was living it with you. So congratulations once again for that, and thank you. We all very, very grateful that what you have done for our food industry and what you've done for all the chefs across the country. Now time for some Bengali breakfast created by the master chefs here at the Taj Ganga Kutir. Wow. And usually तो मैं ना toast करती हूँ champagne के साथ, हाँ. but I think आज हमको बांग्ला चाय मिलेगी क्या? आपको बांग्ला आता है? आता है। तो अभी हम बांग्ला में जो नाश्ता खा रहे हैं तो क्या बोलना चाहिए? अच्छा तो खड़गपुर वाली है इसीलिए तो ये तो बांग्ला बोलेगी पूरा, बोलो ना। ना अभी तो एक्टर जानी। एक टू जानेगा। आप ना? एक टू চল একটু বুঝতে পারি কিন্তু বলতে পারি না। হ্যাঁ ওইটা আমার সঙ্গে সেম প্রবলেম आहे। मराठी मुलगी, well I'm a Punjabi girl living in Mumbai since 95 and
बेस वाज ऑलवेज जमशेदपुर, धनबाद, कैलकाटा, धनबाद, तो वो yeah. ऑब्वियसली बातों में तो Correct. कॉकटेल हो ही जाएगा. बट आप होटल शेफ से सेलिब्रिटी शेफ, नहीं मैं शेफ ही हूँ. देयर आर टू मेनी पीपल स्पेशली किड्स. सर, हाउ टू बिकम अ सेलिब्रिटी शेफ? आई सेड first become a chef, create a body of work that is worth celebrating, so Yeah. it can be in front of the screen, and not behind, yeah, there's need so not many be chefs yeah. like Hemant Oberoi and Correct, all. They correct, never came yeah. in front of the screen, but they are one of the most celebrated chefs. Yeah. So you're right. What has food meant in this entire journey to you? Like, has it been your comfort, your creativity? Has it been discipline, or has it been escape, or does it mean something completely different to you? So the way I look at And while you talk about food, yeah. I'm digging in also, Yeah, no. because it's too tempting. So the way I look at food I say is food is my life. Life has different emotions. Life has different moments. Food is also like that for me. So it's not just one thing. So it's everything. It's food is life. So for me, I cannot. You take food out of me, my life is gone. So it's that important. I mean, everyone knows the success, right? Everybody knows the successful chef Sanjeev Kapoor. And I'm pretty sure you must have gone through some hardships in life where at some point, I don't know if that happened, but I want to know, was there any time when you said, nahi hoga ye mere se, I want another path? Because, you know, I want to celebrate the fact that success is not easy. सबको वो खुशी वाली पार्ट, वो सेलिब्रेटेड चीज दिखती है, लेकिन वो जो स्ट्रगल गया उसके पीछे, यू नो, द गैमेट ऑफ इमोशंस दैट हैव गॉन, हैज समथिंग लाइक दैट हैपन इन योर लाइफ? So I think that is life. That is life. So life में ऐसा नहीं होता है कि लाइफ में दिन भी होता है, रात भी होती है. It's not something that और ये जो स्ट्रगल बोलते हैं, मुझे लगता है स्ट्रगल नहीं होती है. That is life. आप ऐसे सोचो, आप पैदा हुए, right? और आप उस समय बच्चे क्या एकदम, you are a baby and you can't even sit, right? So if somebody says, oh my God, what a struggle, that baby cannot sit. No, it's training. It'll take time. But there is a joy till the time you sit, right? There's a way how you look at it. So the way it just, the baby looks at you, it smiles, oh my God, and then first turn, oh my God, look at that. Do you call it a struggle? Because struggle is also being celebrated. And that's why most people look at things as struggle. They're not struggle, that's life. That's how life is lived. It's not something, you're getting trained for it. And in that, आप जब बैठ के खड़े हो गए तो आप गिरोगे, साइकिल चलाना सीख रहे होगे, गिरोगे आप. Struggle है, that's not struggle, that's the process. So, बट यू न्यू इट एट एवरी पॉइंट दैट दिस इज अ प्रोसेस, बिकॉज जब आप यंग होते हो, जब आपने स्टार्ट किया है अपना करियर, उस समय उतनी मेच्योरिटी नहीं होती टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस है. Till the time you don't fail, you don't succeed. We understand it at this stage of our lives. But when you decided that, okay, I want to be a chef, were you mature enough to understand कि भाई ये struggle है, I'll go through it? Because that's what I want to teach the people of today. बड़ी जल्दी give up कर जाते हैं. हाँ, that I say कि escapism ना, ये बहुत गलत चीज़ है. For me, I have always believed कि मैं ये करूँगा और ये होगा. कोई रोक नहीं सकता मुझे. So I always have this conviction in my mind. And as far as I have remembered myself, I've had this conviction. क्यों नहीं होगा? ऐसे कैसे? It's not something which is, हाँ आपने बोला हुआ नहीं, हो जाएगा. नहीं हुआ, कोई बात नहीं. थोड़े टाइम के बाद हो जाएगा. And let's say नहीं हुआ, थोड़े टाइम के बाद भी नहीं हुआ. अच्छा. मैं कुछ और तो कर लूँगा ना. आपकी लाइफ में कभी वो पॉइंट आया था कि क्या? कुछ और कर लूँगा? हाँ, ऐसे तो बहुत बारी होता है. हाँ? बहुत बारी होता है. बट इट नीड नॉट बी ऐसा कुछ. सी हम लोग ना ज़िंदगी को इतना ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं, हर तरीके से ऐसे सोचते हैं दैट कि लोगों को क्या सुनना है, स्टोरी इसमें क्या है, इसमें मतलब कि मेरे साथ ऐसा हो गया था, मैं ऐसा था. दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग ऑल ऑफ दैट. आई थिंक मुझसे वो नहीं होता, मेरे से आई कांट डू इट. What people look at is, मैं जब मुंबई आया मैं प्लेटफॉर्म पे सोया. अरे तो क्या हो गया, सोए ना. What does it mean कि ओह जब मैं ऐसा था वैसा था. So I have many friends from my childhood to so इसकी you have not changed. Why should I have changed? ये क्या मतलब हुआ कि मुझे लोग बदल जाते हैं.
क्यों बदल जाते हैं? Because you have more money, you have bigger house, you have better car, you should change. Why should you change? So ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है कि ये हमारी बनाई हुई हैं. 100% हमारी And they could also be like an escape route, right? When you don't want to work harder, when you don't want to push yourself, छोड़ो ना, give up. आपने मनी की बात की. हाँ. मतलब एक ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि you know like cooking was always somebody की या तो मम्मी बनाए, या तो बहन बनाए, या तो चलो घर में छोटू बनाए. Then suddenly छोटू becomes a celebrity and a chef, and someone like you who is now, touch wood, probably one of the only Indian chefs to be the richest chefs in the country. मैं नहीं बोल रही, Forbes बोल रहा है. In many articles it's been written. वो पता नहीं कहाँ से लिखते हैं. Again, your business mind. You did not just stick to food. You always knew the right formula to, you know, do things around the love of your life, food, and make a go of it. Take us through that, because there are so many chefs today. There are hundreds and hundreds and hundreds of chefs who are now influencers. They are home cooks. How do they think about food as also a business? Very good question. See, when I started, for me it was very clear. It was a profession. मैं हॉबी के लिए नहीं कर रहा था. It was my livelihood. So एक चीज़ डिसाइड करनी चाहिए ज़िंदगी में कि आप जो कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो. फोटोग्राफी मैं करता हूँ, बट हॉबी है मेरी. म्यूज़िक मैं करता हूँ, हॉबी है मेरी. राइट? ये प्रोफेशन है. So you have to decide कि is this your profession, is this your livelihood? अगर आपके पास में वो एस्केप वाला रास्ता है तो आप एस्केप कर लोगे. अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ पैर मार के आप बचोगे ही बचोगे. For me it has always been livelihood. That's how it started. So if I did not succeed with it, तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा. So I had to. There was no choice. There was no choice. So I had to. जब टीवी भी शुरू किया मैंने, या उससे पहले भी जब था, मैं I was very clear that I had to learn it. I had to क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उसके लिए मेहनत लगती है. तो सारी मेहनत करी, एंड उसमें अगेन मेहनत करी, स्ट्रगल नहीं करी. राइट? यू कैन से कि अभी क्या है, एंड आई कंटिन्यू टू डू दैट. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ. तो आज मैं कहता हूँ कि अगर आज क्या मतलब 10 साल पहले, ये आज AI आज जो बात कर रहे हैं, आई स्टार्टेड विद दिस मे बी 10 years ago, जब हमने अपनी एलेक्सा के साथ में काम शुरू किया. उस समय जो जिसको आज AI बोलते हो, तो मशीन लर्निंग एंड NLPs, वो सारी आई डीप डाइव एट दैट टाइम. दुनिया में कोई नहीं कर रहा था उस समय. सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ एवरी टाइम. दैट्स मी. आई लव टू लर्न अ लॉट. मुझे सब कुछ पता होना चाहिए कि अब ये चाय आई है, Because कॉफी you आई want to है. be perfect at your job. And I think that's a big difference between what a lot of people don't understand. To excel, मैंने कहीं पढ़ा था कि extraordinary efforts lead to extraordinary results. Always. And you always have put Garbage that in, garbage out. Yeah, absolutely. I think this is the part I admire and love about you the most. The confidence you have in everything that you do. But I also feel that there is one more person in your life who kind of gives you that backing. Like I can't even sneeze without Rahul. Rahul's been a huge support in my life. Absolutely. For everything that I've done. But in your case, I know Alyona, the very lovely Alyona, she's not just been a support to you, but she's also been your business partner. Sure. Is she the person you turn to for honest feedback? I think family is somebody who always tells you what's right, what's wrong. बाकी लोग तो आपको खुश कर रहे होते हैं. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. कैसी भी मतलब वो फिल्म के जो प्रीमियर वगैरह मैं देखता हूँ, इतनी बकवास से फिल्म, बाहर निकलो तो सब बोल रहे हैं बहुत अच्छी है. तो क्यों नहीं, सच क्यों नहीं बोल देते हैं. फॉर मी फर्स्ट माई पेरेंट्स व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, माई ब्रदर, राइट, माई सिस्टर got married. Alyona came into my life for she. Then my daughters. Yes. Right. Her parents also. Yeah. So I did a show called Touch of Turmeric. The whole show was in English, and it was not conversation English. You see, conversational English is very different than when you're doing a show. And so Alyona's dad, actually, I'm saying something, he would stop. He said, no, this is not how you speak.
I used to get very irritated. मैं लगता अरे छोड़ो ना. वही मैं बोलने वाली थी, संजीव कपूर को तो कोई रोक नहीं सकता, नहीं, टोक नहीं, नहीं नहीं. सकता. No, but- in a positive way, you're a towering personality. You know what you're doing. You're confident of what you're doing. And sometimes to such a confident person, even बीबी भी सोच के बोलेगी. नहीं ऐसा नहीं है, मेरी वो मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है. नो, आई थिंक व्हाट आई हैव सीन कि जो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कॉन्फिडेंस सीखने से आता है, राइट. इफ़ यू हैव सो द ईज व्हाट मोस्ट पीपल सी कि बहुत ईजी गोइंग है. आई सेड वो जो ईजी गोइंग होता है ना, इट्स लाइक माई यंगर डॉटर कृति, वो मतलब स्प्रिंटर है एंड वो भागती है. व्हेन शी वुड रन ऑन द ट्रैक, the way she would run, वैसे लगता है she would glide. But वो पता है हमें कि मतलब 6 साल से सुबह स्कूल जाने से पहले 3 घंटे की ट्रेनिंग, ये then when you run on a track. So ये सारी चीज़ें, ये प्रेपरेशन जो है जिसको हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत तो जाती है. that's given. बट वो पर्सनैलिटी टाइप भी होती है कि यू आर ऑलवेज सीकिंग वैलिडेशन कि ठीक है ये, हाँ सब है, ओके. हाँ. हमारा दूसरा होता है ये तो ठीक है, अपना अब बताओ क्या करना. ये तो ठीक है, नहीं ठीक है तो ठीक हो जाएगा. सो एंड आई हैव सीन उसकी जो पावर है ना, दैट पावर ऑफ पॉजिटिविटी, पावर ऑफ बिलीफ. बट देयर बीन केसेस, मैं उस पर मतलब हार्वर्ड में तो केस स्टडी है मेरे पे, वो अलग है, लेकिन मतलब मैं उसकी एक अलग से किताब लिख सकता हूँ ऐसी चीज़ों की जो इन रेट्रोस्पेक्ट आई थिंक मैंने कही हमने कैसे किया था. मतलब माई टीम समटाइम्स टेल्स मी कि सर ये आपको पता था हो जाएगा. मैं नहीं, मुझे पता नहीं था, मैं पागल था, मैंने कर दिया, वो हो गया कैसे. इट वाज समथिंग कुछ अभी हुआ कुछ महीने पहले. एंड शेफ रणवीर बरार, ही कॉल मी, कहते हैं सर वो वर्ल्ड फूड इंडिया का इस बार मैं कर रहा हूँ और उसमें हमें कैसे आपने तो सेट कर दिया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है. हाँ. तो अब हमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है. तो आपने जो किया था उसका आपने ट्रायल कितनी बार किया था. एंड आई पॉज्ड क्योंकि हमने तो ट्रायल किया ही नहीं था. तो मैंने कहा नहीं, कहते मतलब, कहता है कि नहीं मतलब आपने वो इतना बड़ा था, इतना मीडिया था, ये था, आपने अनाउंस कर दिया, ये कर दिया, और आपने फिर वो उस दिन कर दिया. उससे पहले मैंने उससे पहले किया ही नहीं था. तो देन ही आस्क्ड मी, सेज कि सर उस दिन नहीं होता तो, दैट शुक मी कि नहीं होता तो क्या होता. अच्छा, मैंने ये सवाल सोचा ही नहीं था. मेरा तो ये था कि कर रहे हैं तो होगा. सो इफ़ यू हैव दैट बिलीफ, इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, आई थिंक वो बहुत सारी जो पावर है ना, वो सारी दे मिल जाती है, मिल के वो दे आर ओनली हेल्पिंग यू टू सक्सीड. कि इनके साथ मत गलत करो, इन्होंने इतनी सिंसियरिटी के साथ किया है. तो ये मतलब तो एवरीवन कम्स टुगेदर टू एक्चुअली हेल्प यू सक्सीड. वेरी पावरफुल वर्ड्स. ये इसका मतलब यहाँ पे वो अगर ये इंडियन सोप होता तो कौन सा वो शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में हमेशा वो ठक 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 3 बार कैमरा. दिस वाज दैट ठक 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 मोमेंट. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द hotel industry now. You started your career with the hotel industry. Tell me how important it is for this industry, especially legacy institutions like Taj, the way they have shaped the credibility, the seriousness, the discipline of Indian chefs. How important has this whole process been? See, the whole industry, hospitality industry, has been anchored by hotels in India. India, things are changing now. अब अलग-अलग चीज़ें आ रही हैं. Food is part of hotel and hospitality. The part that I look at is largely food, right? Yeah. It's not कि stay कैसा है, pool कैसा है, ये कैसा है. I don't focus on that, but I think this business has evolved from when we were there. Actually, it's funny that you should ask me this. It's time to shake up. I think globally, hotel industry needs to shake. कि ये जो चीज़ें थी तो मैंने 40 साल पहले भी ये सारी चीज़ें देखी थी. कोई ऐसी चीज़ नहीं थी. जिस होटल में पहली नौकरी की उसमें भी पूल था, उसमें भी ऐसे बाथरूम था, उसके अंदर भी पूरा बाथ टब था, उसमें भी ऐसे ही तौलिए एक्स्ट्रा रखे जाते थे, ऐसे ही एसी था, यही था, सब कुछ था. नाउ सम पीपल कैन से कि
और क्या हो सकता है? दिस इज समथिंग विच इज अ चैलेंज, और इसी पे ही सोचना चाहिए. आई थिंक दिस इज सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट आप इसमें क्या करोगे, कितना करोगे. इट्स नॉट ओनली कि अच्छा, नहीं तो पहले ही बहुत मैच्योर इंडस्ट्री थी. एक मैं आध कुछ सजेशंस दे दो. नहीं, मैं ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा. अच्छा, ये हाँ. when you start your own hotel you'll have that. No, I no, no. think. Maybe. हाँ. No, but there's a need for change. When I say need, because that's a human emotion. Yeah. And need is something which has a उस पे प्रीमियम होता है. एंड होटल अगर लग्जरी रिजॉर्ट्स ऐसे हैं तो उसमें लग्जरी के अंदर what is it that you offer? Anyway, मतलब I don't want Yeah. to Yeah. take too much It's a- time on yeah. this, but according It's to an me, interesting conversation. नहीं, अगर मैंने ये कहा है तो कुछ तो तो ये होगा. होगा. हाँ. Food for thought. Yeah. Let's talk about food, a little more about food. Again, I feel कि big hotel groups like this, like our Taj, and Taj के साथ तो आपका भी बहुत long-lasting association है, Mr. Puneet Chhatwal, and you are, I think, childhood friends. What do you think We are still works- like children. Yeah, you all behave like children. That's a different thing. We had a lovely conversation with him also in one of our episodes. How do you think they get it right when it comes to food? They have maintained that consistency. In fact, they are often considered the benchmark of great quality food. What do you think has worked in their favor? What have they done right? Since last 7.5, 8 years since Puneet came into Taj, I can say that he has a world view. He's worked outside India more than he has worked in India. And that evolution on focus on growth, on business, on profitability, on quality, because all this is driven by quality and consistent. So consistent quality at scale. I think that's something which Taj gets it, or IHCL gets it. Yeah. In any business like this, the core thing is execution. Taj has been able to do is they have created great loyalty. I also agree on that. Yes. Because some of their executive chefs have been around for 30, 40 years. So loyalty gives people a chance to express themselves better. So, and also what I've seen, they're also getting trained at the best colleges now, best places. I know there's a program where they go to Harvard, they go to Stanford, they go to Cornell, they are going much more than ever. I just realized 2 days ago in one of their conferences that I was speaking that last year they spent over 100 crores in just sending their key staff, not just key, many people, for training overseas. Now that's significant commitment to their staff. And when you do that, when you are committed, when they're motivated, and in that motivation, everything then They works. perform. Everything But will they work. perform, they excel, they do everything. But what about mental health? You know, we know कि chefs in particular, उनकी job कितनी stressful हो सकती है. I remember when I worked in Intercontinental after coming back from Singapore, you know, the advanced Yeah. culinary course. जब मैं वापस आई, मैंने Intercon में काम किया. वहाँ के chefs 4:30 बजे सुबह आ जाते थे. लेट जा रहे हैं, आके सिर्फ प्याज काट रहा है, कोई सिर्फ स्टॉक बना रहा है. Of course, even executive chefs, they are handling all the different restaurants of the hotel. We've seen so many chefs lose their cool. Do you think there is a need for counseling and, you know, looking after mental health as much as keep pushing them for excelling, because it is hospitality, right? They're supposed to serve others, but they have to think about serving themselves as well and keeping their sanity. What do you have to say to that? I think ये तो ओवरऑल है. वो मेच्योरिटी जो है एज अ कंट्री, एज इंडस्ट्री, सो वर्क लाइफ बैलेंस जिसको हम Balance, कहते yes. हैं. So work life balance, I think, and this is funny that I spoke to Mr. Chatwal yesterday. I said, because he pushes himself so much. Yeah. He does so much. And so team is also motivated. Yeah. When leaders understand it, Yeah. then it'll flow through. It'll flow through. तो वो, but is there a need? I think there's a huge need. Huge. Yeah. मतलब 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी हैं, कि हॉस्पिटैलिटी एज ए प्रोफेशन, आई थिंक द स्टाफ दे नीड टू बी लुक्ड आफ्टर मोर. अभी भी बहुत करते हैं, बहुत. आई थिंक
Industry does a lot, but I think there's a room for improvement. Pay structure better होना चाहिए, work conditions better होने चाहिए, Timings have to be more timings better controlled. होना Yeah. चाहिए, family life के बारे में सोचना सोचना चाहिए. I think it's getting there. I think it's getting there. It's better than what it used to be, but it can only get better. Well, on that positive note, थोड़ा सा माहौल को मजेदार करते हैं. This is the last बिल्कुल. segment. I do a rapid fire round, Okay. and let's do कितना that. खा लिया है मैंने? बातें करते करते रियलाइज नहीं इंसान करता है कि कितना खा लिया. थोड़ा सा मुझे भी ये गुलाब जामुन चखना है. हाँ. So, what dish still reminds you why you started cooking in the first place? Actually इतना ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करता तो मैं और कुछ नहीं बन जाता मैं. क्यों? इसने ये- कोई बुरा किया शेफ बन के? You are the richest chef in the country. ये सब और क्या बकवास है. चाहिए आपको बताइए? नहीं ये देखो लाइफ ऐसे नहीं होती कि एक दिन आएगा एक शो होगा जिसमें शूट होगा और अमृता ऐसा कोई सवाल पूछेगी और उसका जवाब. लाइफ ऐसे नहीं होती. लाइफ नहीं बट यू नो जैसे मैंने जब मैं 8 साल की थी मैंने मम्मी के लिए दाल चावल टमाटर की चटनी आलू का चोखा बनाया था. ऐसे बनाया होगा पर तब ये पता ही नहीं था तब शेफ नहीं कौन पता होता. था. मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था. वही मैं मुझे भी पूछूं, नहीं पता बिल्कुल- था. अच्छा आपको भी नहीं पता था. क्योंकि हमें शेफ नहीं पता था, वर्ड नहीं पता था Word शेफ नहीं कौन पता होता था. ठीक है. So that क्यों is झूठ a- बोलूं. हाँ वो बात है. Done. Okay. जो ना फेमस होते हैं उनको सब पता होता है. पता नहीं कैसे पता है शो के लिए कर रहे हैं. So, yeah, सोच के रखते हैं. आपने नहीं सोचा था. अच्छा ठीक है. ये तो पता होगा कि a dish that instantly takes you back to your childhood. कड़ी चावल. Mama made for you? हाँ, mama. हाँ, had to be. हाँ. One dish you believe every Indian should know how to cook. Every Indian should know this one dish. if खिचड़ी Sanjeev तो Kapoor सबको आनी said- चाहिए. हाँ, खिचड़ी correct. सबको आनी चाहिए. हाँ. पोंगल के नाम दे दो, कोई नाम कुछ मर्जी दे दो, बट दाल चावल वो अच्छे से बनाना आना चाहिए, सबको आना चाहिए. Good one. One food trend you secretly dislike. Oh, there are many. अच्छा तो एक बोल दो अभी के लिए. I think the way younger generation is looking at matcha. The other day we also I cribbed and complained. Matcha is good, Yeah. but the way it is being consumed, Yeah. that's मतलब know the ingredient. जापान जाके देखो क्या है, what is उसका magic क्या है. It's a magical ingredient, but the way it is being consumed. Okay. One dish that the world still hasn't understood properly. Oh, whole of India I can tell you. मतलब बंगाल में बैठे हैं, बंगाल का खाना, oh my God, पता ही नहीं है लोगों को क्या है. Amazing. लोग ऐसे बोलते हैं कि वो गुजराती खाना मीठा होता है. बंगाल के अंदर हमने जो दाल छोला दाल खाई उसके अंदर किशमिश, नारियल, अमेजिंग बैलेंस. चटनी जो बनाते हैं यहाँ पे अमेजिंग. एंड मीठे की तो बात ही क्या है, राइट. सो देयर इज सो मच दैट Indians have to know about Indian food. A kitchen rule that you're very strict about. Oh, many again, but it has to be happy. But how खाना can बना. that be a rule? Oh, it's a rule. मैं कहता हूँ खाना बना रहे हो तो स्माइल करना स्माइल है. करते हुए बना. हाँ. तो rule है. Actually आपके टीवी शो में I think this was one of the things that has been written about a lot. Yeah. That you always had a smile on your face and you had many women falling over you. I know that also. I don't know how Alyona dealt with that part. She's still dealing with it. Oh really? Lovely, Yeah. lovely. But yeah. no, the point is कि चाहे रेस्टोरेंट में है जहाँ पर कोई कैमरा नहीं लगा है, कुछ ऐसा नहीं है. There also I would always encourage my chef कि यार पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनाओ, Yeah. स्माइल के साथ बनाओ. Nice. If the next generation of chefs remembers one thing about your journey, what should it be? Don't remember. Create your own story so that people can remember. किसी को सीटी मारना आता है? मारो जरा प्लीज. मुझे नहीं आता है ये सीटी वाला जा. Oh, good one. At this stage of life, what do you value the most? Family. Beautiful. And let me tell you, you have been like family to me all along. Thank you for being a part of this special episode for Table Talk. It really means a lot. And to be sitting across you, asking you questions, this felt particularly special. So thank you for being a part of my life, for being a part of my show. And I hope I always have you to guide me, to be the mentor that you've always been for me. Thank you, Amrita. I cannot tell you how happy I feel every time I hear about something, or my mom is watching your show and I pass by, I stop, and I just internally I can tell you, you have no clue how proud I feel, how happy I feel every time you succeed, you do something big. Thank you, So that's- I wish you all the best, not just for this show, but everything. May you get much more than what you long and wish for. Thank you.
Thank you. You just brought Okay. tears to my eyes, but I'll always remember that. Thank you.